Assalamu alaikum guys, Muhammad Shehzad Ali, welcome to my YouTube channel, A Dedicated Civilian. A short video surrounding Iqrarul Hassan, जो recently उसके साथ हुआ है, a very disturbing event. Iqrarul Hassan, मैं कहता हूँ एक पाकिस्तान की एक अच्छी, एक पढ़ी लिखी, समझदार, moral लोग, असूल लोग. He is an advocate for Pakistan. He represents Pakistan in a very good, classy manner. ठीक है, एक अच्छा आदमी है. उसका काम देखा जाए तो what he's famous for. I'll start with journalist का journalist. A risk taker है, दिलेर है. हमारी पाकिस्तान की जो एक rotten system है, चाहे वो governmental है, क्या जो streets में हो रहा है, ठीक है, from smuggling to sexual exploitations, human trafficking, fraudsters, पीरी फकीरी, name it. इस लड़के ने किधर किधर ये नहीं किया ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए और अपनी जान को खतरा में डालता है. ठीक है, अ गुड चैप, वंडरफुल मैन. और मैंने उसको काफ़ी सालों से फॉलो ऑन किया. तो रिसेंटली जो उसके साथ हुआ मैं बड़ा ना अपसेट हुआ था. नाउ इकरारुल हसन को तो मैं किसी पर्सनल लेवल पे नहीं जानता, बट with my own common sense that I keep on highlighting, common sense, he's a very famous personality. And for years, सालों से ये बंदा मीडिया की मेन स्ट्रीम लेवल पे चलता है. ठीक है, सो आई डोंट थिंक कोई भी पाकिस्तानी इंसान कह सकता है जी मैं इकरारुल हसन के बारे में नहीं जानता, क्या मैं इसके काम के बारे में नहीं जानता. ठीक है, और भी जर्नलिस्ट हैं, बट लेकिन उन लोगों का एक डिफरेंट एक स्टेज प्लेटफॉर्म है. They have chosen a more of a discussion, debate, chit chat. ठीक है, वो सेफर राउट जो है. ठीक है, और उसमें भी उन लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हुए. बट इकरारुल हसन, he could have done the same, but no, he chose the hard line, serious news. ठीक है, और ऐसे लोग हमें अच्छे लगते हैं. They pass much information that is required to understand Pakistan. मैं तो कहता हूँ इकरारुल हसन जैसे लोग, उसकी टीम जो है, ये लोग असासे हैं पाकिस्तान के. ठीक है ना, बट रिसेंटली they were very treated harshly. ठीक है, they were humiliated, they were stripped of their dignity. ठीक है, they were treated inhumane, stripped naked, electrocuted to the private genitals and many other हमने सुना है. और जिन लोगों ने ये अनफॉर्चुनेटली मेथड अप्लाई किया था इनके ऊपर, ये कोई थर्ड क्लास, कोई बदमाश, कोई किसी इलाके के बदमाश नहीं थे, अनपढ़ लोग नहीं थे. ये एक दायरे की, पढ़ा लिखा दायरा, एक कानून का एक पावरफुल दायरा. ठीक है, who works in many different fields, who operates many different fields. ठीक है, इनका लेन देन to the top level तक होता है, and they're involved in many other areas. ठीक है, but amazingly जो इनका बिहेवियर था विद इकरारुल हसन और उसकी टीम के साथ, it was animal behavior. ठीक है, egoistic, as if they are untouchable. ठीक है, और perhaps कोई आम इंसान हो तो शायद वाकई अनटचेबल है. जो तो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो हमारी जुडिशरी है, कानून, जो पुलिस है, अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं है. ठीक है, आप लोगों के आगे एक लड़का क्लियरली पकड़ा गया है. ही हैज beheaded a young lady, नूर मखदूम, और अभी तक वो सर्कस शो चल रहा है. ठीक है, सो वी हैव दिस वेरी bizarre सिस्टम इन प्लेस फॉर नाउ इन पाकिस्तान. इस्लाम से तो हम लोग बहुत दूर हैं. ठीक है, इस्लाम का तो कोई हार्डकोर कानून तो है नहीं है. वी फॉलो द ओल्ड ब्रिटिश सोसाइटी लॉज. Perhaps those laws they have done well in the England society, but इधर तो लोग ज़्यादातर जानवर हैं, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो गवर्नमेंट में, जानवर लोग हैं. एंड IB का जो केस हुआ है इकरारुल हसन के साथ, ये तो जानवरों वाला केस था. ठीक है, these were animals. एंड पढ़े लिखे लोग, बट पता नहीं जो इन लोगों ने मेमोराइज की हुई थी किताबें many years ago, when they must have done the test to come out to this field, to be employed under this field, वो किधर गई, वो सारे, वो पढ़ाई किधर गई, वो मेमोराइजिंग किधर गई है. ठीक है,
सो दैट शोज टू मी पढ़ाई इंसान के असूल नहीं बनाता, उसके मॉरल कैरेक्टर को नहीं बनाता। और ये तो हम लोग देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लुटेरे हैं सारे ज़्यादातर, और पढ़े लिखे लुटेरे, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी एंड अदर डिपार्टमेंट्स, इन लोगों ने लूट मचाई हुई है, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी सैड कॉन्सेप्ट, वेयर इज पाकिस्तान हेडिंग? यस, हम लोग जो कहते हैं टॉप प्लेटफॉर्म में हम लोग वी हेयर वेरी वेरी एलोक्वेंट वर्ड्स, यू नो, जब वो स्पीचेस बोलते हैं एलोक्वेंट वर्ड्स, ऑन ग्राउंड रॉटन सिस्टम है सारा। बट इकरारुल हसन जैसा बंदा टू बी ट्रीटेड लाइक दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी स्पेशली, एंड टू बी समबडी टू गो थ्रू दैट। और जिस बंदे ने ये मेथड उसके ऊपर अप्लाई किए, who executed these moves and these tactics, ठीक है, to humiliate him, to strip him from his dignity. You can only do that if you hate somebody so much, severely, ठीक है। और क्या कोई ऐसा बंदा हो जिसके मेरे जैसा बंदा जस्टिफाई कर सके, यार, he was a pedophile, he was a rapist, he raped children, women, or क्या he was a murderer of many people, or he was part of a gang, or he was somebody who has addicted many people onto heavy drugs, A-class drugs, heroin for example, or that he's a terrorist who has killed our soldiers, हमारे फौजीज ने मारे हुए, ठीक है। और क्या ये कोई जासूस था जिसने आके टेररिस्ट को फंड सप्लाई किए, वेपन सप्लाई किए, कोऑर्डिनेटेड विद देम, ठीक है, किस तरह करना है, क्या करना है। Even then I can understand emotions running high, ठीक है, or they got caught in the moment, you know. But yet, this was Iqrarul Hassan, a very famous man, a well-known man in society of Pakistan for his work, ठीक है। I'm talking about people like terrorist or some agent of another country. Even then, you do not strip them from the human dignity, ठीक है। हाँ, ये रेलेवेंट है जी, जो कानून इस वक्त पाकिस्तान का है, जो हालात है, that's a different debate. But let's just stick to the morals, the codes and morals. आप किसी को किसी की ह्यूमन डिग्निटी को स्ट्रिप नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे वो इंडिया का एजेंट क्यों ना हो। एंड फॉर प्राइम एग्जांपल आई विल गिव यादव, ठीक है, रैंक कर्नल, मिलिट्री, इंडियन, ठीक है, इंडियन मिलिट्री का बंदा था। He was caught with all the evidence, ठीक है, there was just no denying his involvement, he was very heavily involved. But the people who handled his case, they were mature, sober, professional, they followed protocols, ठीक है, they followed instructions, and they did not strip this scumbag Yadav from his human dignity, and rightfully so, you should not, ठीक है, उसको सजा इंशाल्लाह मिलनी चाहिए, फांसी उसको होनी चाहिए, that we hope he does, but जो तो हालात हैं इस मुल्क के, अल्लाह ही जानता क्या होगा। But they did not get carried away, they kept that composure, they kept mature and sober. But ऐसे बंदे के साथ गुस्सा कर चलना, कि ऐसे बंदे के आगे आप लोग emotionally you burst out, perhaps some people will justify it, but somebody like Iqrarul Hassan, amazing यार, इसके साथ हुआ क्या, क्यों इस तरह हुआ? अच्छा guys, so मैंने दो स्टोरीज को कवर किया। In one hand, Colonel Yadav of the Indian military, how he was not stripped of his human dignity, ठीक है, but in the other case you have the IB case, ठीक है, which involves Iqrarul Hassan, a very famous journalist, known for all the good work, जो उसने अच्छे काम किए हुए, ठीक है, common sense की बात है। I'm sure my viewers or anybody who takes serious agendas, serious developments around the country very, very patriotically, very passionately, वो सब यही कहेंगे, Iqrarul Hassan is a decent human being, a decent आदमी है, who performs his duty well, ठीक है। But you have now his case where he's involved as a victim, and those who accused of this
madness, this animal behavior, okay, this grievous assault on him, are of a department called the IB, Intelligence Bureau in Karachi. Okay. But this case is quite bizarre. It is जिधर IB के लोग ही खुद ही corruption में involved थे. They were caught in the act. There was evidence involved. Rather than sitting down, this is for the senior level, जो IB के senior लोग थे. Rather than sitting down, studying the case, assessing the case, holding the culprit in front of them, charging him, ठीक है, for his misconduct, but totally एक ऐसा डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट माहौल बना है जिधर बेचारे जो एविडेंस लेके गए उनके पास, जो हक को वाजिया करने की कोशिश कर रहे, they end up being assaulted in the most disturbing of events. ठीक है, absolutely appalling जो उनके साथ हुआ है. ठीक है, and I hope if there's any decency, any ounce of moral, कोई असूल है हमारे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो लोग उसको प्रेजेंट इस वक्त कर रहे हैं, आई होप दैट ये वो लोग will punish these culprits. ठीक है, not just with suspended, not just being suspended alone, but with jail. जेल इनको होनी चाहिए. ठीक है ना, they deserve jail. थर्ड क्लास लोग हैं. ठीक है, और ऐसे थर्ड क्लास लोग ऐसे दायरों में नहीं होने चाहिए. In such positions, these positions are for people with morals, sober, maturity. ठीक है, and I hope now we will look forward, we will watch, we will assess what will happen with this case. But we hope these people will go to jail, inshallah ta'ala. And please, इस मुल्क को बचाएं लुटेरों से. ठीक है, पहले ये मुल्क डूब चुके. It has been corrupted, it's infested with just too much crimes. ठीक है, there is no punishment happening in regular basis. Only people with low income, low profile, ठीक है, with not much of a family background or financial support, they are the one who be punished on time. ठीक है, इसके अलावा सर्कस शो तो चलता रहता है पाकिस्तान के अंदर. A very famous case of a daughter of ambassador थी, नूर मखदूम, आपके आगे ही है, वो सर्कस शो चल रहा है इस वक्त. ठीक है, because the accused, his father is a very wealthy man. ठीक है, उसने लोग खरीदे हुए हैं, and so इस वक्त वो शो चल रहा है. ठीक है, an appalling case है. ठीक है, बंदा clearly he has been caught in the act. There is clear evidence to prove he was the accused. He murdered her. लेकिन कभी क्या स्ट्रेचर, कभी वो क्या व्हील चेयर में बैठ के आ रहा है, कभी स्ट्रेचर में वो कभी लेट के आ रहा है. ठीक है, कभी वो पागल बन रहा है. ये तो माहौल है हमारे मुल्क का, एक सर्कस शो. सो आई होप इकरारुल हसन, he receives justice, inshallah ta'ala. That's it. And to end the video, मुल्क की जो बात आती है, ठीक है, जिस तरह हम लोग बड़े प्राइडफुल है पाकिस्तान के लिए. ठीक है, बुजुर्गों का एक स्टोरी है बुजुर्गों की तरफ से. वो कहते हैं ना, सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर, वो कहता है मुझे उस फौज से नहीं डर लगता जिसमें 100 शेर हों लेकिन उनका उस्ताद जो लीडर है वो गीदड़ है. मुझे उनसे नहीं डर लगता. हाँ, मुझे उससे ज़रूर डर लगता है जो चाहे 100 कुत्ते भी हों लेकिन उनका जो सरदार है वो शेर है. मुझे उससे ज़्यादा डर लगता है. सो लेट्स जस्ट लीव विद दैट पॉन्डर. हम पाकिस्तान इस वक्त किधर खड़े हुए हैं? व्हाट आर वी रियली इन लाइफ? ठीक है, व्हाट इज रियली आवर वर्थ? ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई विल लीव इट विद. Again, I hope Iqrarul Hassan has a quick recovery and may justice be served. Inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.